Okay. Yeah. How many time? How many minutes? 45 minutes. Okay. Okay. I'm emergency. I'm get everything. Okay. 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 I'm Okay. shy. Yes. मरीना एयरपोर्ट ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का नाम से ये जगह ब्लेस होने का डिक्लेयर करता है। ये जगह में प्रभु का राज्य आने का डिक्लेयर करता है। ये जगह में यीशु मसीह का नाम से पीपल में बी सेट फ्री। हर एक लोग washed by the blood of Jesus Christ। salvation के लिए प्रार्थना करता है। Let people return to Christ in the name of Jesus Christ। यीशु का नाम से sanctify this land, washed by the blood of Jesus Christ। प्रभु यीशु में रिटर्न होने का जकरिया चैप्टर 12 प्रभु आप लास्ट डेज में you are going to pour out the grace Lord upon this land so that they may look to you Lord Father God। यीशु का नाम से आमेन। Here in Narita town, five-star hotel, and today I came. I went to the Nagasaki, and today I came here and to tell the world that Jesus is the Lord, and I pray Jesus is the Lord, that He sets free people. Those who believe Him will have eternal life, the life that will never be ending. So I pray today in the name of Jesus Christ, this Narita town, that may the Lord Almighty, the blood of Jesus Christ, may wash them from all the sins, all the contrary. May the rule of the government, may the rule of the this nation be let their freedom. The God's freedom must come to this land because Jesus Christ has come to set free the which is bondage, to see that which is blind, but to set free those who are in the captivity. So today we see here in Japan, in the land here is under the bondage, under the darkness, because the Spirit of the Lord told me that one of the darkest part in the world, in the spiritual realm. So I came here to pray for the people of Japan and to speak the word of God, and that I declare the word of God today, that I want that let the Lord's word, I declare that let be freedom in this land, let the light of Christ to come in this land, because the Lord can deliver them from the kingdom of darkness into the kingdom of light. And this is the day I declare, exercising the Luke chapter 10, 19, all the authority of the heaven and earth has been given to me and to us. And because He has passed us to the apostle today, be the follower of Christ, I exercise the authority of Jesus today, that all the bow down at the feet of Lord Jesus Christ, all the demons, all the satans, all the dark forces in this land, let be bow down at the feet of Lord Jesus Christ. Today I declare this land washed by the blood of Jesus Christ. Let it set free the people, and the blood of Jesus Christ can stand against all kinds of the darkness. So I declare that the people of Japan can be set free from all the contradictions, set free from all the that is suffering in this world. Lord, I pray in the name of Jesus Christ, I bless this land. I bless this land. I declare this land that it belongs to Jesus Christ. Tokyo belongs to Jesus Christ. Osaka belongs to Jesus Christ. Nagasaki belongs to Jesus Christ. Hiroshima belongs to Jesus Christ. And Tokyo belongs to Jesus Christ. Let Japan be washed by the blood of Jesus Christ, Lord. Japan be washed by the blood of Jesus Christ, Lord. Praise the Lord. ये Suzuki Juka. Suzuki Juka place का नाम है, ये बस स्टैंड है. And I pray in this area, in the name of Jesus, this area, I pray in the name of Jesus, the blood of Jesus Christ, yes, in the name of Jesus, this place be sanctified by the blood of Jesus. The people of this area be turned to Christ, and I pray all the kingdom of light, to come in this area. I bless this land, be fruitful, be multiply in the light of Christ, and the mercy, let the mercy of God fall upon these people. Yes, I pray in the name of Jesus Christ, may the Almighty God have mercy upon these people. May they turn to accept His Son, Jesus Christ, and I speak all the people
of Jesus, and in the spiritual kingdom, in the spiritual kingdom, let there be light in the name of Jesus. I pray that everyone will turn to Christ so that they may receive the light, the mercy, and the light of the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom of light. Every loneliness, let turn into joy. Every loneliness will turn into joy. Every backsliding, every not accepting the true God, let them to turn to Christ. In the name of Jesus, I declare all the poles of the air, on the land and the sea, I declare that the authority of the kings of Luke chapter 10:19, I declare by the authority of Jesus Christ, I declare this land light to come here in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. हम यहाँ पे नागासाकी में खड़ा हूँ. यहाँ पे चाइना टाउन है. This is the city of Nagasaki. जापान नागासाकी में मैं खड़ा हूँ और परमेश्वर जो मुझे मैसेज दिया था एंड नागासाकी बहुत ही अंधेरा, द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल के मैं यहाँ आया है और यह मैं चाइना टाउन में खड़ा हूँ एंड प्रभु बोला है कि यहाँ पे और एक बार बहुत जोर से अर्थक्वेक होने वाला है और चर्चेस लोगों को जागने के लिए और चर्च लोगों को मतलब मैसेज दिया है कि चर्च लोग जाग. मिरेकल्स पावर ऑफ गॉड जो है यहाँ पे जरूरी है और परमेश्वर बोला है कि ये जगह में बहुत सारा अंधेरा है और ये अंधेरा को प्रभु का लाइट चाहिए. द ट्रू गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो सच्चा सुसमाचार यहाँ पे जरूरी है. तो इसीलिए हम यहाँ पे आया है एंड आई एम प्रेइंग. यहाँ मैं प्रार्थना कर रहा है, 2 दिन से प्रार्थना कर रहा है कि ये जगह के लिए मैं प्रार्थना किया और उसके बाद में पास्टर लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये जगह में प्रभु चाहता है कि बचाना चाहता है, लाइट आने देना चाहता है. एंड जो कोई भी इस वीडियो को जो देख रहा है, प्रे फॉर नागासाकी के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ये जगह में लाइट आ जाए, उजाला आ जाए, ताकि द किंगडम ऑफ लाइट टू कम इन दिस एरिया. एंड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का नाम से यहाँ परमेश्वर का ज्योति आने के लिए, प्रभु का राज आने के लिए और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उसका राज को प्रकट होने के लिए. लेट आई declare and decree in the name of Jesus, let there be light in this area, let there be light in this area. प्रभु का ज्योति आने के लिए, लाइट आने के लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ. नागासाकी में प्रभु का प्रेजेंस आने के लिए, प्रभु का राज आने के लिए, यहाँ का क्रिश्चियन लोगों जग जाने के लिए I declare and decree in the name of Jesus Christ, every dominant darkness, every principality and bow at the feet of Lord Jesus Christ. हर एक प्रिंसिपल यहाँ में जितना डार्कनेस जो है यहाँ पे लाइट ऑफ क्राइस्ट को आने के लिए, हर एक डोमिनेंट को, प्रिंसिपल को, हर एक राज को, द किंगडम ऑफ डार्कनेस आई स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस. प्रभु का राज ज्योति लाइट आने के लिए मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड. लेट देयर बी लाइट इन दिस एरिया. प्रभु का प्रकाश आने के लिए, क्योंकि जेनेसिस चैप्टर 1 में प्रभु ने बोला है लेट देयर बी लाइट. उस समय में सूरज निकाला और उसके बाद चांद निकला. एंड दैट सेम वे एक फिजिकल दुनिया में जो आया था, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी परमेश्वर को लोग जो प्रभु का द सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रभु द मैसेंजर लोग, प्रभु का द अपोस्टल, प्रभु का लोग जो कमांड कर रहे थे लाइट आने के लिए. टुडे आई डिक्लेयर एंड डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, लेट द लाइट ऑफ क्राइस्ट टू कम इन दिस प्लेस. आई प्रे लेट देयर बी दिस प्लेस वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह का लहू से उसको धोने के लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ. Amen. Praise the Lord. According to the God's revelation, we come here in the Red Cross Hospital in Japan, Asaya City, Nagasaki, and because we couldn't get the permission, we cannot enter inside. But we are praying from outside that let the supernatural things to happen in this area, and may God Almighty, the mercy of God to come in this area. Let the love of the Father, God Almighty, glory to visit in this area, and let there be light in this area, so that may they experience the supernatural power of God, the supernatural work of God to do in this area. And I declare and decree this Asia city, Nagasaki, may God mercy to come, glory to move in this area. And as per the Genesis chapter 1, God spoke, let there be light
today I declare that there will be light in this area, and there's many sick people. There are many different kinds of sicknesses are inside. But I pray that may God have mercy come upon them, and there will supernatural healing take place in this area. This inside hospital, that the visitation of the angels, the visitation of the supernatural visitation, the Holy Spirit, supernatural visitation of the God Almighty. Every sickness that is a leg broken be healed in the name of Jesus. Every depression, every cancer be healed. Every TB, malaria, all kinds of sickness be healed in the name of Jesus. Brain tumor, brain cancer, liver problem, and different blood cancer. I declare healing to take place, supernatural healing to take place in the name of Jesus Christ in this hospital, and all the lonely spirit will live in that life, and the spirit of depression, the spirit of anxiety, spirit of loneliness will live their life. And I declare the joy of the Lord, peace of the Lord to come in this area, and God Himself intervene their life. God Himself come and heal them. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Glory to the Lamb of God. Thank you for the healing. Thank you, Lord.